वेलकम वंस अगेन हमारे इस स्पेशल आईपीएल शो में, जहां पे हम आपको बताते हैं कि कौन सी बेस्ट कॉम्बिनेशन, कौन से बेस्ट 11 आपको जीत के करीब, आपको जो विनिंग प्राइस है उसके करीब लेके जा सकते हैं। एंड वी आर डूइंग दिस रेगुलरली, वी आर कीपिंग यू अपडेटेड एंड होपफुली हमारे सजेशंस आपके काम आते हैं। मैं हूं साइरस, आज आपको इस शो पे होस्ट कर रहा हूं और मेरे साथ हैं हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट राजश्री। अंजलि छुट्टी पे हैं एंड या आई एम रिटर्निंग आफ्टर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। मेरी तबीयत खराब हो गई थी। आई श्योर होप आप लोग मुझे मिस कर रहे होंगे, बट या लॉट ऑफ क्रिकेट एक्साइटमेंट टुडे एज वेल। वीकेंडर है राजश्री एंड डबल हेडर्स का क्या बताएं, मतलब एक्साइटमेंट कम होती ही नहीं है आईपीएल में अगर वीकेंड आ जाए तो। बिल्कुल। और जिस तरह के धमाकेदार परफॉर्मेंसेस रहे हैं साइरस, बिकॉज ये पूरा का पूरा एक लॉग जैम बना हुआ है, राइट इन द मिडल करेक्ट। ऑफ द पॉइंट्स टेबल। ऑब्वियसली यू हैव जीटी एंड सीएसके लीडिंग द पॉइंट्स टेबल, बट ये जो 10 पॉइंटर्स वगैरह जो टीम्स हैं, बहुत बहुत क्रूशल है। और उसीलिए आज एलएसजी के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशल रहेगा आज का मैच, because you're looking at what happened with them. They started well, they've got a few setbacks. KL Rahul missing है अभी, बट करेक्ट। मैं तो आज के मैच के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि पहली बार आईपीएल इतिहास में दो भाई आपस में करेक्ट। कैप्टन के तौर पे भिड़ेंगे। और ये दे आर सो प्राउड ऑफ ईच अदर। दे आर इट्स दैट ब्रदरली लव। They've obviously played for Mumbai Indians together. They played for India together. राइट। पिछले साल से सेपरेट हो गए, अलग अलग आईपीएल टीम्स में गए, और अभी इट बी वेरी वेरी फैसिनेटिंग टू सी। और आपने अगर कृणाल पांड्या का वो स्पीच देखा होगा लखनऊ सुपर जायंट्स को, एक छोटी सी वीडियो उन्होंने रिलीज की थी, वेरी पेप्ट अप, एंड आई लाइक द कॉन्फिडेंस दैट दीस टू ब्रदर्स हैव, कृणाल एंड हार्दिक। दे कैन रियली टर्न अराउंड गेम्स ऑफ क्रिकेट ऑन देयर ओन। आई मीन, भाइयों की लड़ाइयां घर पे देखने को मिलती है, वो एक सिबलिंग राइवलरी हमेशा होती है, लेकिन जी। ऑन कैमरा दीज गाइज हैव डिफरेंट कॉमराडरी। बट एक्साइटिंग होगा देखने के लिए। आज का जो मुकाबला है पहला, वो है लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच। वहीं दिन का दूसरा मुकाबला है आज राजस्थान और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच ना। सनराइजर्स हैदराबाद ऑब्वियसली पॉइंट टेबल में स्ट्रगल करती हुई, एंड राजस्थान के लिए, जैसे राष्ट्र ने बताया, मिडल ऑफ द पॉइंट टेबल, इट्स क्रूशियल फॉर देम टू पिक अप अ विन। बट फर्स्ट we will discuss the first teams. Gujarat Titans have never lost against Lucknow, so that is also something that you will consider before making your team. If you could just move to the teams and Rajshri's team first on the screen, yeah. So Rajshri, has the tactic been like that for you? Do you think, considering Gujarat's form in the tournament and considering Lucknow has had difficulties beating them, को मुश्किलें हुई हैं, have you kept a Gujarat heavy side for yourself today? Exactly, because also, I mean, if you look at my captain and vice captain, it's pretty clear that I'm going with the two leading GT bowlers, right? Obviously, Tushar Deshpande has 19 wickets, one more than Rashid and Shami, but you never know. They might also race ahead. And Rashid has had I mean, he sort of slipped down Hmm. the radar for a couple of matches. Then he was brilliant in that last game for the Gujarat Titans. And Mohammad Shami, I mean, he's been providing you breakthroughs in the power play with the new ball, in the middle overs. And Shami has been very, very difficult to get away. Correct. That's exactly why I have these guys, and especially that spell against Delhi Capitals where he bowled 4 overs on the trot and destroyed the top order. Obviously, GT couldn't win, but Bowlers as captain and vice captain. Wow, that's exactly. I very, mean, very and different also tactic. this is because of the venue there. So you want to see what happens, because batsmen haven't really run away with a lot of big scores. Hmm. So you want to see whether these guys can do it. And I mean, obviously, you want to make multiple teams, and the rest of it is pretty academic. Riddhiman Saha, Nicholas Pooran, Shubman Gill, again, very, very good form. Ayush Badoni doesn't ever fail to impress, does he? Recently scored his maiden IPL 50. Marcus Stoinis has been there and thereabout, but I believe he'll still be pretty important for the Lucknow Super Giants. And again, Vijay Shankar, so impressive with the bat. Hardik Pandya, Krunal Pandya, both brothers, both captains in my team because of an all-round impact side, as you know it as well. Correct. All-rounders are so crucial in fantasy cricket. And Noor Ahmed, again, another very Yes. young Afghanistan bowler, seems to be thriving under Rashid Khan's tutelage and guidance. So that is something that you'd want to see as well. और इंटरेस्टिंग, लाइक जिस तरह आपने बताया, गुजरात का थोड़ा तगड़ा भारी लग रहा है इस मुकाबले में। दैट्स व्हाई राष्ट्र की टीम आप देख सकते हैं व्यूअर्स की, गुजरात हैवी है। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंगली उन्होंने गेंदबाजों को कैप्टन और वाइस कैप्टन के तौर पर रखता है। वी मूव टू द सबस एंड राष्ट्र के सबस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करता आ रहा है इस पूरे टूर्नामेंट में। नया पहली बार इम्पैक्ट सब का जो रूल है आईपीएल इस T20 फॉर्मेट में लागू किया गया।
एंड कहीं ना कहीं it's interesting and people are really slowly getting used to this, familiarizing themselves with this. हम जो फैंटेसी 11 जो बना रहे हैं टीम्स, उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी ये है कि उनको अंत वक्त तक पता नहीं चलता कि कौन सा प्लेयर खेलने वाला है टीम में, लेकिन आई थिंक इट कीप्स द मिस्ट्री अलाइव, व्हिच इज आल्सो गुड समटाइम्स. Absolutely. And look, I mean, sometimes you've seen captains struggling to name their playing 11s or even 16s. I find that a little strange because you should. I mean, Anil Kumble also pointed it out that day, the other day. He said you captains should be able to remember. But I think it also comes to a point where if you're bowling first, you don't know who your impact player is going to be. It can get a little confusing. And for some captains, they just want to keep it straight and simple and say, "Yeah, field में देखा जाएगा जो होगा." अभी अगर मैं bowling कर रहा हूँ, I know I'll have an extra bowler. If I bat second, I'll have an extra batter. But see, if you look at the impact subs, that's why I have 3 from LSG, and I think one of Ravi Bishnoi or Amit Mishra could again play an impact. I mean, they would love bowling on this surface because Ahmedabad, you've seen a little bit of grip. You've seen pacers also getting their dues, and you've seen spinners come into play later on in the game. David Miller is a bit of a dark horse for me throughout this tournament because he has not been able to replicate that success that he had in 2022, finishing off games for Gujarat Titans. Can he do that? Can he do that more consistently in the business end of the tournament is what I would like to see, Cyrus. I mean, interesting choice of impact subs. Kyle Myers specifically अब the order जब उनके साथ दूसरे छोर पे केएल राहुल नहीं होंगे तो फिर what combination do they think? Do you think आज maybe they might give Quinton de Kock a chance? It's difficult, Cyrus, because I mean Myers has done his bit. कभी-कभी perform नहीं कर रहे होते, but I would have liked to see Quinton de Kock a lot earlier because of the strike rate value that he brings in, right? अब केएल राहुल के जगह पे I think they've signed up Manan Vora, so there might be a replacement there, and but Kyle Myers को हटा के now you bring in Quinton de Kock, who hasn't played throughout the tournament with KL Rahul out, will be a tough call. And why would you want to keep KL Rahul out of the game? Kyle Myers out of the game is going to be another question. Yeah, it's Karun Nair who's coming in place of Karun Nair in place of Lokesh Rahul. So interesting shuffling is going on inside LSG's camp. We have to still wait and see कि मुकाबले में जब मैच और टीम शीट्स आती हैं सामने तो किस तरह की चेंजेस होंगी. बहरहाल बात करते हैं कि मैंने भी टीम बनाई है. Yes, as the host, I am also allowed these privileges कि मैं भी टीम बना सकूं, तो उसके बारे में बात करते हैं. तो I mean, yes, Gujarat heavy. Obviously because of the form that they have been. हाँ, home पे इतना मतलब कुछ ज़्यादा अच्छा form नहीं रहा है, लेकिन फिर भी on paper these are imposing players and definitely some people that you should look out for जब आप अपनी fantasy team बना रहे हैं. शुभमन गिल and Marcus Stoinis. Now गिल अपने form की वजह से he's been brilliant throughout the tournament. उनको इसलिए मैंने अपने कप्तान के तौर पे रखा हुआ है. आज hopefully fire करें. Marcus Stoinis all-rounder हैं. फॉर्म में बल्ले से लोड ऑन दी ऑर्डर काफी कंट्रीब्यूट करते नजर आए हैं, इसलिए मैंने मार्कस स्टोइनिस को अपने बतौर कप्तान रखा है. रिद्धिमान साहा, काइल मायर्स, डेविड मिलर, यस एज एन इंपैक्ट सब राष्ट्रीय की टीम में थे, बट आई स्टिल फील डाउन द ऑर्डर ही कैन बी इंपैक्टफुल. सेम with Nicholas Puran, who's been fantastic throughout the tournament. Rahul Tewatia, you never know. He's that kind of a magic man, can come down the order and get quick runs. Rashid Khan, Noor Ahmed की तारीफ तो आपने राजश्री से सुनी ली है. One of the reasons that you should have and consider him in your team. Mohammad Shami has been consistently picking up wickets in the power play. और जब आप गेंदबाज में टीम में लेते हैं तो सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि आपका जो गेंदबाज है विकेट्स ले रहा है कि नहीं, खासकर पावर प्ले में जबकि अटैक कर रहे होते हैं बल्लेबाज. सो एन इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर पिकिंग मोहम्मद शमी. Ravi Bishnoi, in and out, his performances have been inconsistent in the middle of the tournament, but somehow he's an impactful player and someone off the lot जो आप के पास already जो options available हैं उसमें रवि बिश्नोई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं जो कि आपको अपनी टीम में कंसिडर करने चाहिए. तो ये है मेरे प्लेइंग 11. अगर सबस की बात करें तो आई एम श्योर ये ज्यादा डिफरेंट नहीं होंगे जो कि पिछले मुकाबलों में. इफ आयुष बदौनी हैज बीन आई मीन गुड फॉर्म में वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं, तो हो सकता है एज एन इम्पैक्टफुल प्लेयर मे बी उनको मिडिल ऑर्डर में जगह मिले. सेम विद अमिश मिश्रा, ही हैज बीन कमिंग इन, बॉलिंग इज 4 ओवर, ज्यादा फील्डिंग में कुछ कंट्रीब्यूट करते हुए नजर आएंगे बिकॉज ऑब्वियसली उमर का उन्हें लिहाजा करना पड़ेगा. बट he's been picking up wickets जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक गेंदबाज के लिए, एंड कंसिस्टेंटली
runs को बचाते हुए. Same with Mohit Sharma at the other end. I've just kept one impact player as my option. They've been consistently using him. Either Shubman Gill impact sub के तौर पर बाहर निकलते हैं या फिर कोई और खिलाड़ी होता है. That's something we'll have to see combination. But Mohit Sharma has been consistent with his performance, so he is my impact sub for this game. So मोटा मोटा कह सकते हैं राजश्री, गुजरात का पलड़ा भारी है. Lucknow has never beaten them in the tournament, which kind of psychologically works against them. So what do you think would be, the odds today? Because we have seen upsets in the tournament. It's not that Gujarat needs to win this. If they win this one, they qualify automatically for the top 4. But Lucknow might have pressure if they lose this one. No, and they will be under severe pressure because of two back-to-back games that I'm going to talk about. One was the Chennai washed out game, right, at home. And the fact is that Chennai won against, who was that against? Chennai won against Mumbai Indians on Sunday. And with a significantly high net run rate prospect. So there was a pretty significant victory as well. So that's why they'd be so desperate to put another 2 points to that tally. But look, it's going to be difficult. It's easier said than done because of the lineup that Gujarat Titans have. Everything is settled for them. And I like the attitude of the team. They don't take their victories too seriously. They don't take their defeats too seriously. They just have that end goal in mind. And they want to create a good, proper team environment, which is what Hardik Pandya and Ashish Nair have done. So it's going to be difficult. And LSG, on the other hand, have suffered some setbacks. Like I said, KL Rahul as captain. That's going to be difficult. That's going to be difficult void to fill. Who can episode the whole Virat Kohli Gautam Gambhir episode. I mean, उसी ने ही मीडिया में इतना लाइमलाइट ले रखा है कि खेल के बारे में कम बातें हो रही हैं, लेकिन वो कंट्रोवर्सी के बारे में ज्यादा बातें हो रही हैं. Behral, I mean, that is the part of the game. Controversy, spice, I mean, publicity, that's what drives cricket at the end of the day, right? I mean, खेल के साथ साथ इसका भी जरूरी है, purely for entertainment purpose. Almost हम कभी promote नहीं करते इस चीज को. और promotion की बात आई, we just want to make it clear. All of the team suggestions that we give you in this session, in this little show of ours, are purely based on our opinion. We are not associated or being sponsored by any Fantasy 11 ऐप और प्लेटफॉर्म. इस बात का आप बहुत ही ध्यान रखें कि हमारे सजेशंस आपके नॉलेज के लिए हैं, आपके एजुकेशन के लिए हैं. ये हमारे अपने ओपिनियंस हैं. आप इन्फ्लुएंस होकर अगर आप ये कर रहे हैं, सो वी आर नॉट लायबल. Just want to be very sure about that. बहरहाल पहला मुकाबला दिन का काफी रोमांचक होने वाला है. टेबल टॉपर्स भिड़ने वाले हैं. Who is going to win? Well, a lot of odds are in the favor of Gujarat, but Lucknow, well, in the absence of KL Rahul, can they come back? We'll have to wait and see. We'll slip into a quick little short break, and we'll be coming back with the second match of the day, which is between the Sunrisers, Hyderabad, and Rajasthan Royals. Wow. Perfect time to bell. Welcome back, guys. So this is the second match that we'll be talking about of the day. Double header Sunday ko. Always excitement in the IPL. Sunrisers Hyderabad taking on the Rajasthan Royals. We'll be discussing. हमने पहले अपने सेशन में डिस्कस किया था कि Titans और Lucknow Super Giants किसका पलड़ा भारी है. We shared our teams, but now we are going to move on to Rajasthan and Sunrisers. Now, quickly talking about the teams and Rajshri, आप जानते ही हैं Sunrisers have been dismal in this tournament, and because of the reasons, दिल्ली की टीम वापसी करते हुए नजर आ रही है, लेकिन Sunrisers Hyderabad, I mean, wow, it's pretty disappointing performance by them. Disappointing, heartbreaking if you're an SRH fan, because nothing seems to work for them. 2016, correct. Obviously, they won that tournament and they reached the final in 2018, I think. I don't know what's gone wrong with them. No captain, it's sort of that captaincy position is jinxed. The coaching staff is not getting it right. They have someone like Brian Lara leading that coaching team. Nothing is working. Also, like I said, I keep saying that for a lot of teams, you just messed it up at the auction table. Sunrisers Hyderabad, they got too carried away by Harry Brooks' record, I think, because they needed to look at that overall T20 perspective. They looked at what Harry Brooks did against a third-rate Pakistan bowling attack in Pakistan on roads. They're not even pitches, right? Pakistan playing on roads. And those pitches have been criticized the world over. Why are you doing that? I mean, obviously, they've been scared of Australia and England coming and beating them and thrashing them. And that's why they got those pitches, and England found a way to beat Pakistan, even on those ridiculous surfaces. And I think you got just too carried away by Harry Brook. What has he done? Apart from that 100 against KKR at Eden Gardens. Same with Rajasthan Royals, by the way. I know runners-up last year.
Um, they started off well, but some bizarre team selection. Why are you sending Ashwin ahead of Dhruv Jurel and Shimron Hetmeyer? You know you messed up your batting lineup. You want to send Shimron Hetmeyer further up. You sent Ashwin, and Yeah, suddenly you substitute uh, Riyan Parag. You bring in Riyan Parag instead of Yashasvi Jaiswal. It's crazy. Why wouldn't you bring in a bowler? Why don't you want to let Shimron Hetmeyer and Dhruv Jurel bat for 12 overs? Let's see. Because by the time these guys got together, it was too correct, late. They were never going to be able to do anything. Right? They correct. had lost too many wickets. They won too many runs. You never know. Whatever that score was in the eighth or ninth over, you should have let loose Shimron Hetmeyer and Dhruv Jurel, who've done so well for you this summer. So again, Sangakkara said it was an embarrassing defeat, but I think that defeat was as much to blame for on the field as well as off the field, because the think tank and the coaching staff should also equally take some responsibility. You can't send Ashwin ahead of Shimron Hetmeyer. No, sir. You mean Ashwin Test cricket? Yes, but T20, T20 में yeah. अलग ही भी- अलग ही फॉर्मेट. अब yeah, हैरानी होती है कभी कभी ये सोच के, आपकी आवाज में वो मतलब वो हैरानी मुझे फील हो yeah. रही है कि आप अश्विन जैसे बल्लेबाज को ध्रुव जुरैल के, जो कि काफी अच्छे फॉर्म में, ऐसा नहीं कि ध्रुव जुरैल खराब खेलते हुए नजर आए हैं प्रतियोगिता में, ही हैज बीन परफॉर्मिंग, और आप अश्विन को उनके ऊपर भेजें तो काफी एक्सपर्ट्स सवाल खड़े करेंगे इन इन डिसीजंस के. बट बहरहाल बात करते हैं आज के हमारे जो सेकंड मुकाबला है उनमें हमने कौन से प्लेयर्स चूज किए हैं. सबसे पहले मैं राजश्री की जो टीम है आज की उसमें ध्यान डालूंगा. You have to look at the points table and you have to look at the selection. कहीं ना कहीं राजस्थान के प्लेयर्स का पलड़ा डेफिनेटली भारी रहेगा, एंड आई एम श्योर राजश्री की टीम में भी ऐसे ही नजर आ रहा है मुझे. नहीं, मेरा भी 7-4 ही है यहाँ पे. लाइक माय फर्स्ट टीम साइरस, यहाँ भी 7-4 है. दैट्स व्हाई आई हैव जायसवाल एंड संजू as captain, vice captain. Jaiswal चल नहीं पाए, unfortunately run out in the last game after a horrible mix-up with Sanju Samson. But I mean, Jaiswal again in contention for the orange cap. Sanju Samson, he's played some very good knocks. You want to see him go out there and express himself, and maybe that will just set the tone for the Rajasthan Royals, and they won't have to do anything strange down the order. Josh Butler again, he's not been able to do anything that he was touted for last year, over 800 runs. This year he's really struggled after the initial half. Shimron Hetmeyer, I really hope they don't send Ashwin and Riyan Parag ahead of Hetmeyer. I mean, that's just travesty of justice when you see that in cricketing terminology. Rahul Tripathi again. Please, Rajasthan, if you're listening to this, please listen to what Rajshree's pain and anguish उनकी आवाज में जो दुख है वो प्लीज समझिए. You cannot be sending Ashwin over Dhruv Jurel. साइरस, क्योंकि राजस्थान की टीम ऑन पेपर इतनी अच्छी है, इतना सॉलिड, इतनी अच्छी, वेल बैलेंस्ड. आप देखिए उनके पास पेसर्स भी हैं, स्पिनर्स तो है ही हैं, अश्विन, चहल, जाम्पा. तो आपको चाहिए कि आप यार थोड़ा सा मतलब उसको आप जस्ट प्ले योर बेसिक क्रिकेट. इतना ज्यादा इनोवेटिव होने की जरूरत नहीं है. क्रिकेट एट द एंड ऑफ द डे, आई नो देयर आर लॉट ऑफ इनोवेशंस, इंपैक्ट प्लेयर्स, ये वो एक्स फैक्टर सब कुछ होता है, बट it's about what is cricket. It's about scoring one run more than the opposition. Rahul Tripathi again, not his best season, but you want to see, I mean, who else can you pick from the Sunrisers really? Then you have Ashwin. Like I said, he's been brilliant as a bowler. Ashwin, no surprises there. Aiden Markram, Bhuvneshwar Kumar again from SRH, Chahal, Zampa and Natarajan, because you want to see how Zampa does today and whether he can reinforce himself as one of the best spinners in the T20 format. Cyrus. Moving on to the subs, Rashri has chosen. I mean, Anthony, balance है, ऐसा नहीं कि बैटिंग हैवी रखा है. राष्ट्रीय ने ये कोशिश की है कि बॉलर्स भी इस टीम में रहे, बिकॉज ऑब्वियसली आपको एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप एक टीम के 7 खिलाड़ी अपने फैंटेसी लाइन में रखें, और इट्स अक्रॉस ऑल फैंटेसी. तो आपको जरूरी नहीं है कि बैलेंसिंग रखना है, बट ये कोशिश जरूर करनी चाहिए कि 7 खिलाड़ी एक टीम के हो. और ये भी एक फायदा होता है कि इंटरनेशनल खिलाड़ी आप 4 से ज्यादा अपनी टीम में रख सकते हैं. एक टीम आईपीएल खेलते हुए नहीं रख सकती, वो रूल उनको अप्लाई नहीं होता. बट वी गेट दिस अपॉर्चुनिटी. अपने talk us through your subs for this game, Rajshri. I mean, like why? I mean, Trent Bolt in the subs. Oh my God, why? No, because I mean, I would have had Trent Bolt there because I eventually had to take a call between T. Natarajan and Trent Bolt in my 11.
because Okay. of the overs that Tina Trajan bowls. Tina with Trent Bolt, when he bowls up front, he has given you power play wickets, but also I'm seeing whether the SRH batters would want to hold themselves back against Trent Bolt, Correct. right, in the Correct. power play as well as maybe towards the end, and depends on what situation that innings is in. So how many wickets is he going to really get for you? As Hmm. well as T Natarajan, I probably think that a batter from the Rajasthan Royals would want to take a little more risk. So it's Correct. just those mental calculations. Otherwise, if I had to put a team on the field, obviously I would have Trent Bolt in the playing 11. So I'm just trying to figure out whether your approach against Trent Bolt is going to be one of collective caution, because the SRH batters not in the best of form. Yeah. Would they want to just see off Trent Bolt without giving him too many wickets because they know how dangerous he can be, especially in the power play? That's the exact reason. Dhruv Jurel, obviously, we've spoken about him. And again, a lot of emphasis on Marco Janssen Hmm. because he's given you some breakthroughs. He's been expensive. But that's also because teams have taken those risks against him. But he has that bouncer. He had, that one that he got Venkatesh Iyer with the other day, Oh yeah. straight, accurate over middle stump, quite a potent side. And again, Harry Brook, is just a how do it's just a blind bet, just a blind bet because I don't really have much expectations from this guy. या बातें चल रही थी कि हैरी ब्रुक की जगह ग्लेन फिलिप्स को भी मौका मिलेगा, लेकिन I don't know if we've lost Cyrus there for a bit, but yes, we're talking about Harry Brook. And Cyrus कह रहे थे कि शायद ग्लेन फिलिप को मौका मिले. momentarily. Oh yeah, he's back. हाँ, Cyrus Hi. है वापस. Hi. You So back? yeah, You back? we're talking about Harry Brook, Glenn Phillips को शायद मौका मिले. Moving over to my team, Yeah. yes, कहीं ना कहीं मैंने भी राजस्थान के प्लेयर्स को ज्यादा तवज्जो दिया अपने मुकाबले, अपने इस मैच में, अपने 11 में. यशस्वी जायसवाल, like Rashi said, orange cap holder, might even turn out to go through the tournament and carry that form. Aiden Markram in the middle order, he has been the I think एसआरएच की टीम में आपको जब प्लेयर्स छाटने हैं तो बहुत ही कम ऑप्शंस हैं आपके लिए, और उसमें से कुछ कुछ जो ऑप्शंस मिलते हैं आपको एडन मार्करम मिलेंगे, आपको एक राहुल त्रिपाठी मिलेंगे, मे बी यू कैन बिस्टो सम फेथ, बट अदरवाइज द बैटिंग हैज बीन वेरी डिसअपॉइंटिंग, बहुत ही निराशाजनक रही है. संजू सैमसन, हैरी ब्रुक, लाइक आई सेड, आई स्टिल एम बिस्टोइंग फेथ कि शायद आज वो अपनी शतकीय पारी को दोहरा सके. राजश्री को उम्मीद नहीं है इससे, बट दैट्स व्हाई ही हैज बीन पुट इन हिज इंपैक्ट सब. मैंने फिर भी थोड़ा फेथ रखा है उनमें. सेम विथ हेनरिक क्लासन, मिडिल ऑफ द ऑर्डर. शायद अगर टॉप ऑर्डर फील होता है तो हेनरिक क्लासन के ऊपर काफी दारोमदार रहता है कि वो अपनी टीम को मुसीबत से निकाले. शिमरन हेटमायर हैज बीन इन फैंटास्टिक फॉर्म, बट लाइक राजश्री सेड, chances that he needs to move up the order. Josh Butler, सरप्राइजिंगली जिस टूर्नामेंट से शुरुआत की थी वैसा अपने मिडिल ऑफ द टूर्नामेंट वैसे प्ले गेट नहीं कर पा रहे, तो शायद देखना होगा कि जॉस बटर आज अपने प्रदर्शन से can he get some points for you. भुवनेश्वर कुमार has been excellent with his economy rate wickets, शायद नहीं पिक कर पाए हैं, बट इंपॉर्टेंट है कि भुवनेश्वर कुमार को वो लय जारी रहे उनकी. मार्को यानसन के बारे में राशि ने अभी बात ही की. ट्रेंट बोल्ट ओपनिंग स्पेल में विद संदीप शर्मा माइट बी इंपैक्टफुल. हाई स्कोरिंग मुकाबला मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, बट हाँ, गेंदबाजों के लिए काफी कुछ होगा इस सरफेस पे. मूविंग ऑन टू द सबs, इम्पैक्ट्स अब, यस, it's painful to pick players, but हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि जो ऑप्शंस अब तक पास में भी लागू किए गए उन पे थोड़ा अमल रहे. देवदत्त पडिक्कल इन द मिडिल ऑफ द ऑर्डर एंड एडम जैम्पा, क्या इन प्लेयर्स के बीच में शफलिंग होगी, कॉम्बिनेशन ये अब तक टूर्नामेंट में देखा जा रहा है. देवदत्त पडिक्कल को भी इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर बीच में इस्तेमाल किया गया है, सेम विद एडम जैम्पा, बट या Rajshri put Adam Zampa into his main team. He would want to see him perform. Maybe he might be used as an impact sub. Yeah. T Natarajan, like Rajshri said, his 4 overs are crucial, and maybe I feel that he might be used as an impact in the second innings if SRH have to defend the score. But if they are batting first, Rahul Tripathi could be a good option in the impact sub category if they are not able to score as many runs. So that were the teams for today. It's a double header, ladies and gentlemen. याद रखिएगा, 2 मुकाबले हैं, एक 3:30 बजे और एक शाम के 7:30 बजे. दोनों ही रोमांचक मुकाबले हैं. हालांकि जो पहला मुकाबला है गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच, that will be very important. So last take and last inputs, Rajshri, who do you pick would be winning the games, Gujarat Titans or Lucknow? Cyrus, the scales are so heavily tilted in favor of 2 particular teams because of their depth. I would go with
GT in the first game and RR in the second game, provided they don't do too many, experimentation. Just stick to your regular batting order. Don't send Ashwin ahead of Shimron Hetmeyer. Please don't send Riyan Parag ahead of Dhruv Jurel. Recognize form, recognize game, and I think you'll be fine. Yeah, even I would put my money on the Gujarat Titans for the first game, but कहीं ना कहीं देखा गया कि डेस्परेशन में एक टीम ना कभी चमत्कार दिखा देती है. हमने कोलकाता को पिछले मुकाबलों में देखा करते हुए देखा गया. आज अगर सनराइजर्स हारती है, so you can kiss their campaign goodbye because that will be it. Mathematically वो अभी भी टूर्नामेंट में अलाइव हैं. अगर आज का मुकाबला जीतते हैं तो फिर वही ना मैथमेटिक्स के ऊपर उनकी बात आ जाएगी उनके टॉप 4 में प्रोग्रेस करने की. So you never know what desperation happens. I would put my money on Sunrisers for this one just purely because of how desperate they are to win. बहरहाल ये था हमारा Fantasy 11 show. Thank you for joining again, reminding all of our viewers that these suggestions that we give you, हम अपने opinions आपको पहुंचाते हैं ताकि आप जब टीम्स बना रहे हो तो आपको थोड़ी मदद मिल सके अपनी टीम्स फिक्स करने के लिए. लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव वही है कि आपको एंटरटेन करें और इंफॉर्मेशन बेस आपको देते रहें. और हम किसी भी फैंटेसी 11 ऐप या प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए नहीं है, ना फिर उनसे स्पॉन्सर्ड है. So enjoy the games today, guys. Double headers, and we ourselves will be enjoying the games, and we'll definitely see you very soon in our next show. Take care, guys, and have fun.